लेकिन फिर भी इतना तो चलता है सर, ऐसी कोई बात नहीं है. But I really want to solve the mystery of this. Why is it that now, they've sent Arvind Kejriwal to jail, they've sent Manish Sisodia to jail, they've sent Satyendra Jain to jail. There are three of the most ministers in the Aam Aadmi Party government who are in jail right now. And the BJP is still attacking the Aam Aadmi Party government on all sorts of issues. Let's ask Mr. Ruben Mascarenhas, working president of the Aam Aadmi Party Mumbai. Ruben Saab, namaskar. Namaskar, namaskar RKB, namaskar Pradeep. How are you, sir? How are you? First, let me express my utter disappointment at the fact that you haven't won anything in Delhi. I mean, I don't know how that happened. How did that happen? I still can't figure that out. And only 3 in Punjab. I was expecting at least 4 to 5. But then there was that जन आतिशी के घर पे लोग आ रही हैं, महिलाएं आ रही हैं, वो पोस्टर लेकर के कि भाई हमारे 1 लाख रुपए दो, हमारे 8,000 रुपए दो. ये क्या है सर? प्लीज कुछ जरा समझाएं. देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके माध्यम से दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि जनता का फैसला सर आंखों पे, इसमें दो राय नहीं. लेकिन उसमें भी अगर आप देखें, मैं पंजाब में कांग्रेस को 35,28,000 वोट मिले हैं और आम आदमी पार्टी को 35 लाख वोट मिले. तो अंतर केवल 28,000 का है. वो क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, उनको 7 सीटें मिली, हमको 3 सीटें मिली. बट दैट सेड, इसका आंकलन विश्लेषण हम देख रहे हैं. 2 साल पहले हमको 2/3 बहुमत मिली थी और उसके बाद डेफिनेटली मनन चिंतन सब कुछ हो रहा है पार्टी में. दूसरी चीज, दिल्ली में आई थिंक एक पैटर्न एस्टैब्लिश हो गया है कि जो लोग हमको असेंबली में सपोर्ट करते हैं वही लोग बीजेपी को ये लोकसभा इलेक्शन में सपोर्ट करते हैं. एंड आई थिंक ये एक ट्रेंड सा हो गया है. हमने सोचा कि जिस तरीके से जाति की गई आम आदमी पार्टी पे, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की गई, जिस तरीके का हमने जन सैलाब देखा, हमें लगा कि वहां पे सातों की सातों सीट आएंगी. लेकिन फैसला हमारे सबके सामने. हमारा वोट शेयर जरूर बढ़ा. जिस जमाने में ऑलमोस्ट 2-2 लाख विद सोमनाथ भारती जी. सो आई थिंक ओवरऑल बाय एंड लार्ज ठीक है. देर परिस्थितियों में जहाँ पे हमारे सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल जी जेल में बंद थे, सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं, सांसदों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे एमएलए को प्रताड़ित किया जा रहा है, दिल्ली सरकार को एक तरफ से गवर्नमेंट, जस्ट अ फ्यू डेज अगो वी एक्चुअली हैड द नेशनल ग्रिड फेलियर. एमएल खट्टर ने जैसे ही पदभार संभाला, ठीक उसी दिन पे पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया लिटरली अंधेरे में डूब गया. देयर वाज अ ह्यूज पावर ग्रिड फेलियर एंड ऑल सेड एंड डन. एक तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म करने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है, इनकी बौखलाहट है. क्योंकि याद रखिए, यूपी में आम आदमी पार्टी ने एक भी सीट नहीं लड़ी. लेकिन ग्राउंड पे जो जहाँ पे मेरे भी जानकार वगैरह है, और जब मैं बात कर रहा था तो लोगों ने कहा कि नहीं, वो जो अरविंद जी ने जो कहा कि अगर बीजेपी आएगी नेक्स्ट नंबर योगी का है, दैट हैज एक्चुअली सर्व्ड टू गैल्वनाइज अ लॉट ऑफ पीपल. एंड आई थिंक दैट हैज सॉर्ट ऑफ tilted the result. But that said, no two ways about it. So what about these ladies? So what about these ladies who are coming again and again to the Aam Aadmi Party office and elsewhere, demanding money? Before I come to that, let me just finish. मैं मुंबई की बात करता हूँ और मुंबई में आम आदमी पार्टी has tilted the scales in favor of the महाविकास आघाड़ी और the इंडिया अलायंस. आप किसी भी एमपी को पूछ लो, सब एमपी कहेंगे कि आम आदमी पार्टी ने बहुत ही निर्णायक भूमिका ये इलेक्शन में निभाई. और जिस तरीके का कैंपेनिंग आम आदमी पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं ने किया, ऑलमोस्ट 500 एक्टिव वॉलंटियर्स इन एवरी लोकसभा, 1.5 महीने में डोर टू डोर गए. जिस तरीके से पैशन के साथ, मजबूती के साथ उन्होंने कैंपेनिंग किया, वो निर्णायक रहा. तो इसमें दो राय नहीं. नाउ कमिंग टू दिस, देखो ये क्या है कि बीजेपी है भारतीय जुमला पार्टी, बीजेपी है भारतीय झूठा पार्टी, बीजेपी है भारतीय झगड़ा पार्टी. अभी ये उन्हीं के, पहले तो ये जुमला देना उनका स्टाइल है, जुमला देना
चाहे वो 15 लाख का जुमला हो, चाहे वो किसानों की आय दुगुनी करनी हो, तो यही इनका स्टाइल है। ये बस अभी सिचुएशन में जनता का ध्यान जो है अब फाइनली गवर्नेंस पे पहुंच चुका है। और ध्रुव राठी का वीडियो हो या आप जैसे अच्छे पत्रकार जो लिटरली सवाल हमसे भी पूछते हैं, आप सवाल, और आपको पूछना चाहिए, आप एज अ पत्रकार सवाल तो अपना आपको पूछना चाहिए, लेकिन जिस तरीके के प्रोपेगेंडा होने के बावजूद ऑपोजिशन जिस तरीके से उभरा है देश में, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कितनी प्रिकेरियसली, कितनी नाजुक हालत है बीजेपी की दिल्ली में। चंद्रबाबू नायडू जी जो खुले तौर पे अभी उसी मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं जिस मुस्लिम रिजर्वेशन की बोगी पे नरेंद्र मोदी ने जो है पोलराइजेशन करने की बात की। तो अग्निवीर लेट मी आंसर। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि बीजेपी अपने ही कार्यकर्ताओं को ऑफिसेज भेज रही है, और यही थोड़ा सा बोल रहे, आप तो बोल रहे थे जीतने वाले ये है वो है, लेकिन देखो जनता समझदार है, जनता ने वोट किया है, जनता को पता है कि किसी का घमंड चकनाचूर कैसे किया जाता है, किसी घमंड को धरातल पे कैसे लाया जाता है। तो ये बीजेपी को जनता का फैसला मानने नहीं है, बीजेपी को अपने जो भी उनको करना है, जिस तरीके से वो बीजेपी कर रही है, और वो बस डाइवर्शन टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बस ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये इश्यूज रेज कर रहे हैं कि आप ये नहीं कर रहे हो, आप वो नहीं कर रहे हो, आपने प्रॉमिस किया, आप 1 लाख, वो न्याय पत्र का घोषणा था, और ये टाइम we didn't have a manifesto, so I know what the Congress manifesto said and we supported that in many ways. तो all said and done ये एक तरफ से ध्यान भटकाने की कोशिश है। But are you saying, as Rahul Gandhi said, the strong Congress and the India Alliance has made the dictator Modi into a democrat Modi. आज मोदी जी संविधान के सामने माथा टेकता है. He is bowing before the constitution. Modi ji, he is declaring, I have got 72 ministers, out of which 27 are OBCs, SCs 10, ST 5 है, minority 5 है, women 7 है. He is giving a total open disclosure of whatever he is doing. सबको इन्वॉल्व करके, और मोदी जी नारा बोल रहे कि मोदी 3.0, सबका साथ, सबका विश्वास. Now, is there a change in Prime Minister Modi? नहीं सर, अगर चेंज होता तो ये हरकतों से ये बाज आते हैं. चेंज होता तो वो ऑपोजिशन को साथ में लेके चलते. चेंज होता तो ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो है, जो पॉलिटिकल विचंट पूरे देश में चल रहा है, वो बंद कर देते. लेकिन आज ही आप बोल रहे हैं मोदी इज अ डेमोक्रेट मोदी. आज मोदी 3.0 के सामने, नाक के नीचे नीट स्कैम हुआ है. हजारों बच्चे, लाखों बच्चे प्रिपेयर करके ये एग्जाम में मेडिकल कॉलेजेस में भर्ती लेते हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पे पेपर लीक किया जाता है. कुछ लोगों को कुछ सेंटर पे मार्क्स दिए जाते हैं, ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं रैंडमली, और सरकार बिल्कुल चुप है. सरकार ये भी मानने को तैयार नहीं है कि कुछ गलत है. तो आई डोंट थिंक मोदी कुछ डेमोक्रेट मोदी बन गए हैं. लेकिन ये है कि विपक्ष एकजुट है, और जिस तरीके का रिजल्ट आया, हम तो हमेशा से पहले से कह रहे थे that this is much more closer than what the BJP makes it out to be. I don't think Modi is a Democrat. Modi is a megalomaniac. Modi is somebody who doesn't believe in institutions, doesn't believe in the rule of law. And, but do you think he'll change? Do you think he'll change in the sense that the manner in which? Sir, पूरी बात सुन ले. The manner in which all these agencies have been used or misused up till now, do you think that's going to change? We hope that changes. Because at the end of the day, these agencies are also run by officers who are ultimately supposed to uphold the constitution, irrespective of whatever the executive says or whatever the chain of command says, and etc. So this feeling that there is going to be like a continuous
BJP rule for the next 50 years and ये होने वाला है, वो होने वाला है. I think now even the people at ED, and without taking names, I have a lot of my friends who are IAS officers. Ruben, we were hearing about a 1,000-year Reich. Sorry? We heard about a 1,000-year Reich. Remember Hitler? Sir, 1,000 years. इनकी गणित पता है थोड़ी कमजोर है. The last person who thought of a 1,000-year rule was Adolf Hitler, as you That's rightly right. pointed So out, and we know how that's that what people ended. are talking about. So, Yeah. I think पता नहीं है, कभी 10,000 साल बात करते हैं, 5,000 साल बात करते हैं, तो ठीक है, इनकी गणित तो इनकी वीक पॉइंट है. बट मैं ये कह रहा हूँ कि अभी देश में एक ऊर्जा है. देश ने जो बीजेपी का घमंड है, मोदी का घमंड है, वो चकनाचूर कर दिया है और आईना दिखा दिया है मोदी को कि जो कहते हैं ना, that emperor has no clothes. So the Modi is starting to finally sort of realize what it means. But I think it remains to be seen because dictators the world over never change. And I think थोड़ा बहुत आपको कॉस्मेटिक दिखाई देने को मिलेगा. जैसे some people were saying that पहली बार मोदी जी ने किसी एक चीफ मिनिस्टर को गले लगाया. Can you imagine? That was the discussion. That was a prime time discussion. So I was like कि क्या देश के मीडिया को क्या हो गया है कि the only discussion was नरेंद्र मोदी ने पहली बार अपने 10 साल के कार्यकाल के पश्चात एक तो सर ये अभी आज की तारीख में let's get this thing over and done with. This thing about the water crisis in Delhi, it happens every year, and every year we find that Haryana does not release water from the Hakni-Kund Dam, and as a result of which Delhi suffers. So why is it that the Aam Aadmi Party is blamed every time? Please. No, absolutely bang on. I remember when I would work with Satinder Jain ji, who was also, among other portfolios, he also had the water resources portfolio. And they already have a long-term arrangement for water from Himachal Pradesh, which is a win-win for Himachal Pradesh and a win-win for Delhi. It is also enough to suit Delhi's growth for the next 50 years. Okay, this is not 5 years or 10 years or 15 years or 20 years. Now, obviously, all of that water flows through Haryana. And as usual, the BJP governments are playing mischief. We understand what we are seeing right now is a climate emergency. And it's not just Delhi, it's across the country. What is more acute in Delhi is that there is certainly a peak demand, nothing new here. And this time we saw that in energy. The Delhi government successfully was able to support over 8,400 megawatt is essentially the power capacity that we were able to support. But that said, with regards to water, it's sad that despite begging from Haryana, despite writing to the Prime Minister, writing to the President, it's still not worked. And we've gone to the courts. I just hope this is kept beyond politics. But it is really sad. It's really sad if the BJP can hold the people of Delhi hostage just because they don't vote for them in the assembly elections. It's but really the sad. point is, I have to blame you too, because I still remember 10 years ago, was it 8 years ago, when you first came to power. This was 2015, when you got 67 out of 70 seats. I still remember. At that time, Yes. the idea was very, very clear that there would be at least 300 new lakes created, along with the 120 which had gone dormant. 120 जो लेक्स थी या वाटर बॉडीज थी दिल्ली की, उनको रिवाइव किया जाएगा और उसके अलावा 180 और क्रिएट की जाएंगी. जैसे एक जगह है दिल्ली में झील, इट इज कॉल्ड झील, एंड इट इज अ ब्यूटीफुल, इट यूज्ड टू बी अ ब्यूटीफुल लेक, टुडे इट्स गॉट बिल्डिंग्स ओवर इट. जैसे आगे जाकर के अगर आप फरीदाबाद की तरफ जाएं, वहां पर एक बदकल लेक हुआ करती थी. अरे मैं स्कूल में जब हम बच्चे थे वहां पे पिकनिक के लिए जाया करते थे यार. आज की तारीख में वहां पे डीएलएफ की बिल्डिंग है. मेरा ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी के आने के बाद एक जबरदस्त प्रपोजल आया था, उस पर काम भी हुआ कि किस तरीके से इन वाटर बॉडीज को रिवाइव किया जाएगा, किस तरीके से यमुना की रिवाइवल होगी, वगैरह वगैरह बाकी सब चीज होगी. बट वेरी अनफॉर्चुनेटली, स्पेशली विद द यमुना इज कंसर्न, सिंस इट डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम दिल्ली, it originates from Yamunotri, which is not ruled by
the Aam Aadmi Party. The Aam Aadmi Party itself per se has very few sources of water. But whatever there are, why is the Aam Aadmi Party so remiss in not reviving those? अरे जितनी पुरानी बावलियां हैं, जितने तालाब हैं, जितने फ्रेश वाटर पॉन्ड्स हैं, मुगलों के जमाने से जो अभी तक वहां पर बने हुए हैं, why can't we revive those? बताएं सर, रोहन साहब. So I'll try and answer your question, but you have to give me a few minutes. Please go ahead. All these water bodies in Delhi, there is a concerted effort to not just revive them, but also to use them as sewage treatment plants to filter whatever affluent water which basically is let out into these lakes. And for example, if you ever are in Delhi, the next time there's this place called Rajokri Lake, you should by all means go there. That said, there is a massive effort at setting up these water bodies, but these water bodies are no substitute for drinking water. Yes, they are substitutes for groundwater regeneration. Yes, they are substitutes for water for other purposes other than drinking. So it's not potable water per se. So all of that is going on. We've been able to, at the last count, move over 200 plus water bodies which have already been revived. And that's going in the right direction. I would invite you the next time you're in Delhi to come there. But again, everything would boil down to, like even you spoke about the Yamuna. And we have taken action. We have basically moved out heavy industries, which would basically, pollute the Yamuna to a place to beyond the immediate periphery of the Yamuna. We've actually done that. We've actually taken a lot of flack for it, but we're determined to take action. But this is a problem which other states will also have to work into it. You cannot continuously have pollutants coming in from Haryana into the Yamuna, and then the expectation that the Delhi government is able to just solve it overnight. So, despite the constraint, I am told that Arvind is working on this, and before the end of this term, you will see something. Some positive results. Rubenji, but that said, let me come back to water. Let me come back to water. This is extremely important. The BJP is basically holding the people of Delhi to ransom for something as basic as water. We have been writing, Atishi has been writing to the government of Haryana. Atishi has been writing to the central government. Atishi has been writing to the LG. They've had various meetings, but it is really sad that Haryana, basis flimsy excuses, is just trying to sabotage the functioning of the Aam Aadmi Party government in Delhi, and that is extremely, extremely sad. Now, how do you see Mohan Bhagwat ji on fast few days? RSS has been critical. Modi ji को जिस प्रकार से उन्होंने तरह की, एक तो मणिपुर के इशू मोहन भागवत जी ने उठाए, उसके बाद उन्होंने कहा कि you can't have a dictatorial style of functioning. You need to be a democratic style of functioning. That is what the RSS believes the nation should adapt. And then second day we had the organizer blaming, they said you've taken Ajit Pawar and that is bringing a bad moral to the entire political game of BJP. Now, क्या मोदी जी ये सब सुनकर मणिपुर जाएंगे? रूबन जी? नहीं, पर ये देखो, इसके पहले भी आपने कहा कि आरएसएस ने मणिपुर का जिक्र किया, तो क्या हुआ? उसके बाद कुछ हुआ क्या? मोदी जी ने मणिपुर शब्द का भी प्रयोग किया क्या? Did he even make a statement there? Something as simple as okay, yes, there is a breakdown of law and order, and we will at least try and ensure that there is justice there. There were wide reports of booth capturing, if you recall, in Manipur. And if despite that the BJP can lose both its seats there, speaks volumes of the anger against the BJP in that state. That said, I don't think ये RSS की तरफ से तो हमने तो देखा कि कुछ जगह पे जेपी नड्डा ने लास्ट टाइम तो ये कहा कि हमें आरएसएस की जरूरत ही नहीं है. तो बीजेपी के घर में क्या हो रहा है, आरएसएस क्या कह रही है, इस पे हम क्यों टिप्पणी करें? द आरएसएस इज नॉट एन
elected organization. The RSS doesn't contest elections, and I will keep my comments limited to the BJP. But I will certainly say this, that ये RSS plays good cop, bad cop over a period of time rather than basically being the conscience keeper. So I think clearly the RSS understands the kind of anger and disenchantment amongst people, and it is sad that the RSS, if it really wants to do something for the country, should actually be able to get the BJP to stop peddling hate. अभी आप देखिए यहाँ पे मुंबई में खुद इतने बार सांसद रहे किरीट सोमैया जी मिनी पाकिस्तान कहते हैं एक मुस्लिम बहुल इलाके को. कितना सही है ये कितना गलत है ये. और ये दिस इज सच पैथेटिक गटर स्नाइप पॉलिटिक्स, and that is something sadly that the BJP and the RSS cannot stop. So why should we even take what Mohan Bhagwat ji says, with all due respect? Why should we take that seriously? और रही बात रतन शारदा जी के आर्टिकल के बारे में, रतन शारदा जी मेरे भी अच्छे मित्र हैं, हमारी अच्छी खासी डिबेट होती रहती है हमेशा. और ये अजीत पवार तो अभी देखो ये क्या है कि ये सत्ता के इतने लोभी है कि there is so much of naked pursuit of power that they will throw anyone under the bus for it. They are happy to make an alliance with anyone sans ideology. They're happy to do whatever it takes to just hang on to power, irrespective of dharma. ये तो बस बोलने की बातें हैं. Now clearly Ajit Pawar has not succeeded. Ajit Pawar is turned as an albatross around his neck, around the neck of the NDA. People have voted for Uddhav, and आप 9 सीटें बोल रहे थे, मैं तो बोलूं 10 सीट. हमने देखा अमोल कीर्तिकर के साथ यहाँ पे मुंबई नॉर्थ वेस्ट में क्या हुआ. I was there, by the way. RKB, I was there. Wow. In the counting, there was an announcement till the 19th round. There were regular announcements. After the 19th round, announcements stopped. Why were the announcements stopped? We were all told that he's won as per the counting. Then there is a recount request that is done. Then there is a recount basically done, and then the lead was consistently brought down. ये तो ऐसा हो गया था कि they were only counting to ensure that Amol Kirtikar loses. So clearly ये थोड़ा उनको झोल वगैरह करना है in Mumbai language. वो कितना झोल करेंगे? So clearly they realize. And then there was some guy with a mobile inside the restricted area and so on. So there was a mobile found. Then somebody, I was told some relatives of Vaikar were basically moving around. Yes. Then 111 postal votes were invalidated. Again, I would like to reiterate this. As per the rules, which are very clear, और आपको ये याद होगा इंडिया अलायंस की तरफ से भी हमने ये मांग की इलेक्शन कमीशन से कि you first declare the postal result. Only when you declare the postal result, you can then add it. तो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि क्योंकि पोस्टल रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं किया और वो लास्ट तक रखा, इसीलिए ऑल द पोस्टल बैलेट्स वर अगेन स्क्रूटनाइज्ड rather than just looking only at the rejected ballots. So what has actually happened is nothing but Chandigarh Anil Masih 2.0 may not be with the specific dots and dashes of a pen, but certainly by misusing the discretionary authority available with the returning officer. And now I'm told CCTV footage is not available of the entire counting process. Which is shocking. Right? So I think Which is shocking. There are I think it's 27 shocking. cameras. This was in suburban Mumbai. Here, Goregaon कोई गांव खेड़े में नहीं हो रहा था. This was in the heart of Mumbai. Nesco. And in Nesco, at the Nesco counting center, as you rightly pointed out. So yeah, I think clearly people in Maharashtra have shown the BJP the door. What happened to Ashish Shelar? Ashish Shelar जी, आपके शो पे बुलाइए ना, उनको पूछिए ना. आशीष शेलार जी ये बोल रहे थे कि उनको 5 भी आए, 10 भी आए, मैं छोड़ दूंगा. तो क्यों नहीं छोड़ रहे हैं वो? बोल रहे थे पॉलिटिक्स से मैं रिटायर कर लूंगा, कहा संन्यास ले लूंगा, बोला उन्होंने. तो क्यों नहीं संन्यास ले रहे हैं? उनको संन्यास लेने कहिए. वो संन्यास लेने को तैयार ही नहीं है. अभी तो डिस्कस भी नहीं करते. अभी तो उसके ऊपर आई ट्वीटेड टू हिम, उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं. अभी बीजेपी ऐसे ही डिस्कस कर रही. ओ the other day Amit Tatam, BJP MLA slams the BMC. Why? What is there to slam for the BMC? अरे आप ही की सरकार है, आप ही की सरकार प्रॉक्सी तरीके से BMC चला रही है, आप ही के लोग गार्डियन मिनिस्टर्स हैं, यू आर रनिंग इट.
So what do you mean by slams the BMC? How are you separate from the BMC? ये तो BMC तो आप चला रहे हो. बीजेपी जब पूछती है कि हमको सत्ता दो ताकि हम मुंबई का परिवर्तन कर रहे हैं, अरे आपके हाथ में तो सत्ता है, 3 सालों से सत्ता है. आप क्या कर रहे हो? ऐसा क्या? But Ruben ji, Devendra Fadnavis ji का कहना है, don't read much into the results because the difference between MVA and the Mahayuti सिर्फ 1% है. 43.71 was the MVA got and 42.73 is what Mahayuti has got. तो फर्क सिर्फ 1% का है. इसको आप इतना बड़ा चीज मत मानिए, ठीक है? और बहुत रिजाइन क्यों कर रहे हैं? नहीं, एक मिनट, देवेंद्र फडणवीस जी रिजाइन क्यों कर रहे हैं? अगर ये जो नैतिकता की बात थी, मैं फिर आऊंगा की बात थी, ये जिस तरीके से काट छाट तोड़ दौड़ की जो राजनीति की, जिसको महाराष्ट्र की जनता ने नकारा, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, ये भक्ति मूवमेंट के हमारे संतों की भूमि है, ये बाबा साहेब अम्बेडकर की भूमि है, महात्मा फुले की भूमि है. ये यहाँ पे जनता कभी गद्दारी को माफ नहीं करती. और दूसरे चीज अगर कहीं पे अत्याचार हो रहा है, महाराष्ट्र हैज ऑलवेज शोन द वे. महाराष्ट्र हैज ऑलवेज शोन द वे. ड्यूरिंग द ब्रिटिश regime, it was Lokmanya Tilak who provide leadership to the national movement. Gandhi's own guru was Gopal Krishna Gokhale. In modern India, during the Sayukt, at a time when it looked like there was a Congress hegemony across the country, the Sayukt Maharashtra movement again stood up and basically gave voice to subnational yet very much completely Indian aspirations. They have asked Uddhav Thackeray for introspection. Maharashtra has always shown the way. उद्धव ठाकरे जी बोले आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, हमारे साथ बीजेपी के साथ रहा तो आपको 18 मिला था, आपको 9 मिला है, और जो हमारे विरोधी थे कांग्रेस, वो 1 से गया 13, और शरद पवार जी 8 का he won 8 out of 10. He said who was gained? It is Sharad Pawar ji and the Indian National Congress. You have revived them and you have yourself lost. Need for introspection. The BJP is asking Uddhav Banasaheb Thackeray, introspect, come rightfully to the place you belong to. Ruben ji. नहीं, देखिए ये बीजेपी का अहंकार महाराष्ट्र की जनता ने बुरी तरीके से तोड़ा है. और उद्धव, ये सच बात है कि उद्धव ठाकरे इज CM in waiting. I'm not even saying he's future CM. He's CM in waiting. Such is the support for the India Alliance on the ground, at least as far as Maharashtra is concerned. The local body elections have not been held now for almost, this is the 3rd year, for 2 years have been completed. This is shameful that the level of government closest to its people is dysfunctional. Yes. There is absolutely nothing happening, In there is no conversation about that. Eknath Shinde refuses to give the wife of a slain soldier the compensation that was agreed to, and nothing happens. The BJP doesn't even bat an eyelid. There is no discussion whatsoever. All of the projects meant for Maharashtra, whether it is the Vedanta Foxconn semiconductor, or it is the International Financial Center, or it is the diamond bores, or it is the various other projects which consistently, and we are not anti-Gujarat. We have a party in Gujarat. We enjoy a 14% vote share there. We are not anti-Gujarat. But what is meant for Mumbai cannot be snatched away and taken to Gujarat. And that is the real feeling on the ground, RKB. I have campaigned. And you ask people in Marathi, and I'll speak Marathi now for a few minutes. आणि तुम्ही जमिनीवरती जाऊन तुम्ही लोकांना विचारा की तुम्हाला काय वाटतं. अँड सगळ्या लोकांचं उत्तर हेच असणार की भाजप हे गुजरातला प्राथमिकता देतात. ते मुंबई आणि महाराष्ट्रासाठी त्यांनी काहीच केलेलं नाही आहे. मुंबई आणि महाराष्ट्राकरिता जे प्रकल्प आहेत ते ओरबाडून घेऊन ते लोक गुजरातला नेऊन जातात. म्हणजे मुंबईकर नको, त्यांना मुंबई नको, त्यांना महाराष्ट्र नको, मुंबई संपायची आहे ना, आणि मुंबईकर संपायची, आणि हा आम्ही होऊ देणार नाही. दिस इज द फीलिंग ऑन द ग्राउंड. Yes. And now whatever Raj Thackeray says, I mean, what a joke is this? I mean, what Raj Thackeray is? Everybody, the BJP was saying, Raj Thackeray जी आ जाएंगे, पूरा हमारा गणित बदल. क्या गणित बदला? Raj Thackeray जी का सबसे powerful area is basically the Mumbai metropolitan region. क्या चेंज हुआ मुंबई में? क्या चेंज हुआ राज ठाकरे के सपोर्ट के कारण? क्या पासा पलटा? कुछ पासा नहीं पलटा.
You know, Raj Narayan Thakre is an Gade- entertainer. Raj Thakre is a supari politician. He is basically entertainment. And now Raj Thakre, I mean, imagine the hypocrisy. Raj Thakre is now saying की मी भाजपला बोललो होतो की शिवसेनाचं चीरहरण करू नका, तुम्ही ते शिवसेनेचं धनुष्यबाण चोरू नका आणि ते जनता तुम्हाला क्षमा करणार नाही. वाव, मतलब how shameless can somebody get? So I think Uddhav Thackeray By the way, have you heard the latest is the rumor? only man who's relevant here. Oh, by the Raj way, Thackeray is irrelevant. there are some corporate media channels who are running this right now. There is North every Korean- possibility. North Korean media channel. Yeah, oh, fine. Korean media channel. At least a couple of them, they've actually said that there might be repolling in Amethi. I'm not joking. I am not joking. I mean, No, this is the height. This is absolutely crazy. That there was some procedural lapses as a result of which Election Commission might order a re-election in Amethi. I mean, is that funny or what? No, I mean, it's sad, but I think these so-called Noida cabal of channels are increasingly irrelevant. People like yourself, people like Dhruv Rathi, people like Ravish have actually shown the way, and there is much more fan following if an RKB says something than somebody listening to a madhouse during prime time. So I think that's the way, and people just look at the viewership numbers, right? People, all the young people, nobody watches TV anymore. People don't have time for this tamasha. And these so-called BJP spokies who masquerade them as anchors, ye kya hai? So In any event, I hope Arvind comes out quickly. I hope Manish comes out quickly. And I think what has happened to Satyendra Jain is bloody unfair. He's been inside now for almost 3 years. Now I'm like, come on, this is not done. Absolutely not done. I hope these guys come out. Delhi needs a chief minister. I mean, what are you doing? I find this unacceptable. What is going on here? This is terrible. Absolutely terrible. And No, but that's I hearsay. hope- The only evidence is hearsay. I mean, what is going on here? No, but Final I answer. think my final comments are that I am confident in the judiciary. I'm confident in the Constitution of India, and more than anything else, Satyameva Jayate. And I'm pretty sure with the winds that have changed the direction, हवाओं ने जो रुख बदला है, and उसका impact आपको hopefully court के निर्णय पे भी दिखाई देगा. I hope that the court sees the miscarriage of justice, sadly, that it has been perpetuating in PMLA matters with regards to political prisoners. And I hope that Arvind ji is out again at the earliest, giving us the direction, giving Delhi the leadership that we all so desperately need right now. Thank you so Thank you much, so much. Ruben. Thank you very much. God bless you. Great work. Congratulations. Ruben Mascarenhas, of the working president of the Aam Aadmi Party in Mumbai, as always, very, very confident. And he's been all over. He campaigned even in Uttar Pradesh, in Haryana, Very, and Gujarat, very. and all over Maharashtra. And He he's has a heart there in politics. absolutely. In No, fact, he's too